sacred town of our country, Joshimath, is on the verge of sinking. ब्लास्टिंग कर रहे हैं डे बाय डे, रात को लोग ब्लास्टिंग कर रहे हैं जिससे पूरा शेक हो रहा है। देगी सरकार 2-4 पैसे दे, उनसे क्या अपनी पूंजी तो गई है। मुख्यमंत्री जी को बार बार आग्रह किया गया, ज्ञापन दिया गया, लेकिन उन्होंने सुध नहीं ली। Right behind me, the visual speaks for itself. A temple which has completely collapsed yesterday after it developed massive cracks and fissures, just like all other houses, hotels and roadways across the town. Situated at 6,000 feet in the Chamoli district of Uttarakhand, Joshimath, the gateway to Badrinath and Hemkund Sahib, is clearly sinking. 600 structures at the very least have been damaged or partially destroyed. But it did not happen overnight. A slew of wrong decisions and government's negligence has caused the disaster. NDTV went to Joshimath in 2004 when explosions to carry out road construction and to build power projects damaged the integrity of land here. A land which falls in a Zone 5 seismic zone, which means it's an active earthquake-prone zone. There is no denying of this fact that Joshimath's, the sinking of Joshimath has got a geomorphical or geological reasons. But this is also true that the kind of developmental model has been introduced to Joshimath that has been very detrimental. Number one, as we all know that Joshimath is entry to a lot of pilgrim destinations and also adventure spots. And also it goes to the border areas and, those who want to track glaciers, Satopant, etc. They also go there. So Joshimath has a lot of employment opportunities. So people, started building hotels and houses there. So there was a pressure of civic, civil construction, etc. But over the years, kind of development has been introduced in forms of hydropower projects and also the heavy construction like building roads. There is no problem in building the roads, but the way the roads have been built, that is the problem. कि बड़ी-बड़ी जो ब्लास्टिंग करके वहां पर खुदाई करके जिस तरह से सड़कें बनाई गई हैं, that is a real concern, and we are being asked to believe today that every norm is being followed. But I have seen with my own eyes, and we have recorded it on camera, that this is written in Lata Valley, where this NTPC's project is, that blasting ka samay itne se itne tak, blasting ka samay itne se itne tak. So I don't know about, I don't remember that blasting was for roads or for hydro project, but definitely blasting was going on in the Lata Valley. And we have seen it happening. We have shot those visuals and we have got photographs of the boards written that they do blasting from this to this officially. Unofficially, I'm not even talking about. So these things have created a lot of problem because we all know it is a paraglacial zone. It's a very unstable land and it has got a lot of pressure. For last 17 years, the NTPC project is going on. I'm not highlighting, just underlining just one NTPC project, but that is one glaring example there. For last 17 years, if that project is not happened and not completed, and if it is hit 3 times at least by disasters, including the 2021 floods in Rishiganga and Dhauliganga rivers, and 200 people died in that. So what kind of electricity it will provide, even if it is completed in next few years? How costly it will be? Have we calculated that? And do you have any transparency about that? Today, Uttarakhand generates around 5,000 megawatt total installed power, hydropower capability. And we are bringing up a single dam in Pancheshwar, which alone produces more than 5,000 megawatt, will produce if it sees the light of the day. So the पॉइंट इज कहने का मतलब यह है कि अगर इतना बड़ा प्रोजेक्ट आप ला रहे हो तो क्या आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हो? तो जो आप हमें बता रहे हैं कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जरूरी है, सड़कें जरूरी हैं, बिल्कुल जरूरी हैं, लेकिन सस्टेनेबिलिटी भी बहुत जरूरी है। बिकॉज आज जोशीमठ में क्या हो रहा है, अगर आप विकास के मॉडल की, क्या आज जोशीमठ के लोगों को फायदा हुआ आपके इस विकास के मॉडल से? उनकी दुकानें आपने खुद कवर किया है एनडीटीवी पर, उनकी दुकानें बिक रही हैं मतलब बर्बाद हो रही हैं, उनकी दुकानें ढह रही हैं, उनके घर टूट रहे हैं, वो अब माइग्रेशन एक शरणार्थी की तरह कहीं पर रहेंगे. They will live like a migrant somewhere else. So did it really benefit them? Years before the first power plant was constructed in Joshimath in 1980s, two Swiss geologists, Arnold Hem and Augusto Ganzier, carried out a survey and published a book in 1930s named Central Himalaya. They said in their book
that Joshimath is situated on the debris of a landslide and is dangerous for any kind of construction work. But their warnings were blatantly ignored, and 2 power plants were built in the sensitive region. The Vishnu Prayag Hydroelectric Project by Jayaprakash Power Ventures Limited and NTPC's Tapovan Vishnugarh Hydropower Project in 1980s and 2006 respectively. Residents say more than the climate change, blasts under the tunnels of these power plants have impacted the entire adjoining region. जबरदस्त दरारें बढ़ी हैं, लोगों के घर मकानों में धसाव बढ़ा है। जोशीमठ की मुख्य सड़क, जो मेन सड़क है, उसमें जो है दरार आ गई है और जो है पुरानी दरारें जो है ज़्यादा चौड़ी हो गई हैं। लगभग 1 फीट तक जो है मारवाड़ी जहां जेपी का कैंप है वो सड़क धंस गई और हम लोग गए थे मुख्यमंत्री साहब के पास यही बात कहने के लिए कि लोगों को इमीडिएट राहत की जरूरत है। In 1976, the Centre's Mishra Committee, which looked at why Joshimath was sinking, told the government to prohibit construction and not to dig or blast in Joshimath, which could bring an ecological disaster. Successive governments blatantly ignored the warnings and construction work continued unabated. Even after the land started to sink here in December 2022, bulldozers and other heavy earth-moving machinery were deployed to dig into the mountains to widen the roads just outside Joshimath. This finally stopped on Sunday, but by then it was too late. All this construction activity may end up transforming Joshimath into a ghost town. Approximately 25,000 people find themselves in the middle of nowhere, with most of their houses sinking to the ground. And the centre now clear, there will have to be mass evacuations to prevent the loss of lives. 32-year-old Lakshmi lost all her belongings after her house collapsed in front of her eyes. She says she has no will to live as she has lost everything. आपका नाम मुझे बताइए। मेरा नाम लक्ष्मी है, मैं जोशीमठी में रहती हूँ और इतना घर हम अपने आंख सामने टूटते हुए देख रहे हैं और हम खुद जानते हैं कि हम इस हालत में अभी क्या हैं। आप देखिए पूरा घर हर तरीके से बिखर रहा है और हम हर जगह ऐसी देख रहे हैं, हर कोई आ रहा है, देख रहा है और चले जा रहे हैं। भले उन्होंने किया है हमारी व्यवस्था, पानी हमें ऐसी हालतों में देखा है तो स्कूल में शिफ्ट तो किया है, पर लेकिन हमारी मांग यही रहेगी कि जल्द से जल्द हमें अपनी छत दे और हम वहाँ सुरक्षित रह सके। पूरा पैसा जो जमा पूंजी होगी उसको लगा के सब मकानों पे लगा रखा है मैम। यहाँ पे हम अपना जोशीमठ में ये है कि अपना गाय भैंस को धंधा करते हैं, अब खेती बाड़ी का काम है, पूरा जमीन चली गई है, मकान चले गए हैं, हम रोड पे हैं, ऊपर हो गए हैं, जितने भी कमाना था धमाना था सब इन मकानों पे लगा दिए है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं अब इन चीजों के लिए? हम तो खुद ही दुखी हो रखे हैं और कल हम देखते देखते हमारा सामने हमारा मंदिर टूटा जा रहा है और हर दिन यही देख रहे हैं कि इसमें इतनी पूजा करी, इतनी आराधना रखी हमने, ऐसे वो हमारे सामने गिर गया है। तो हमें कल से ना खड़े होने की भी हिम्मत नहीं पड़ी है। बहुत मन से हमने अपना मंदिर को सजाया था, वहाँ पे वो मंदिर भी डूब गया है ऐसे। और आप देखिए इतने परिवार बीच में होने के बावजूद भी ऐसे में यहाँ पे गौशाला थी और फिर गायों को यहाँ घर के अंदर रखा हुआ था, फिर हमने किसी को फ्री में दे दिया गाय भी। अब लगाइए इस घर की हालत है, देखो ऐसे एक एक पैसा एक एक पाई हमने जोड़ा है, वो आज भी नसीब पे हमारा है नहीं है। ये घर तो मैं देख रही हूँ पूरे तरीके से टूट चुका है, पूरा तरीके से। आप मुझे बताइए घर टूटना कब शुरू हुआ? ये हो गया मैम अभी कम से कम तीन चार तारीख से हो रहा है ये ऐसी चीजें, पर ये टैंडल की वजह से ही हुआ है। हमारी मकानों में पहले ऐसी चीजें हमने कभी सोचा ही नहीं था जोशीमठ में ऐसा भी होगा। तो ये पिछले सिर्फ आप बोल रहे हैं पिछले 3 से 4 दिनों में ही घर पूरे तरीके से ढह गए हैं। तरीके से क्या लगता है आपको क्या कारण है इसका? इसका कारण बस यही है, एनटीपीसी वालों ने ये जो किया है, ये पानी का जो टैंडल बनाया है, हमारा जोशीमठ में सबसे ज्यादा खतरा वही बना हुआ है यहाँ पे। तो आप मुझे एक बात बताइए कि सरकार इससे पहले भी ऐसा होता था, सरकार को पता था? देखो इतने हमें भी इतने सालों से इतने पुराने हो चुके हैं हम यहाँ पे, हमें इतना तो नहीं है कि ये ऐसे ही टूटता चला जा रहा। हमने ऐसा नहीं देखा मैम, ये पहली बार हम ये चीजें देख रहे हैं। सरकार को पता था कि ऐसा स्थिति हो सकता है एनटीपीसी का प्लांट लगाने अब पे? ये तो देखो मैम, ये हमें पता नहीं है अब सरकार क्या करता क्या नहीं, हमें इन चीजों का तो पता है नहीं है, पर लेकिन एनटीपीसी से ये पता है कि हमें इन पानियों से हमारी जमीनें पूरी धस चुकी है। 70-year-old Kamla Devi faces the same ordeal. As she stands on the cracked floor of her house, she says all her savings have evaporated. पूरी जमीन उधड़ गई है, पूरा इतनी बड़ी दरारें आ गई हैं
आप लोग कैसे रह रहे हैं इस घर में अभी भी? अब रह रहे बेटे मजबूरी में, क्या छोड़ के जाए कहाँ? नहीं, अभी सरकार ने भी कुछ वो नहीं करा। जब भेज भी रहे कहीं दूर दूर, तो कहाँ घर छोड़ के, कहाँ पानी कहाँ है ना, कोई नहीं आ रहा। आप यहाँ अकेले रहते हैं? 2 रहते हैं हम, बुढ़े बुढ़े, बच्चे नहीं थे। तो आज मुख्यमंत्री आए थे, कुछ बोला उन्होंने? उनसे मौका नहीं मिला मिलने का, बोलने का। और वो यहाँ तहसील से वो करेंगे ना। तो कितने दिनों से ये दरारें आ रही हैं? ये बेटा ये तो बहुत पहले, मतलब 1 महीना हो गया दरार। एक में मतलब 4-5 नवंबर को हमने, ये दिसंबर है, ये दिसंबर से यहाँ दीवार शुरू करी थी बनाया। 10 दिसंबर को आधा काम किया, 11-12 को ये हो गया, ऐसा फट गया सारा। तो अभी मैं देख सकती हूँ आपने घर से भी सारा सामान बाहर बाहर फेंक रखा, सब बाहर निकाल रखा है, यही से सब। तो आप लोग कैसे खाना पीना कैसे कर रहे हैं रात को? कहाँ रह रहे हैं? कमरे है गली में, वो चौकीदारी समझो उनकी, तो उसमें बना रहे हैं, हीटर में बना रही, वो हीटर लाए ना, तो उसमें खाना बना रहे हैं। सरकार ने रहने का कोई इंतजाम अभी कुछ नहीं कर रही सरकार। रात के लिए होटल बता रखा ना, ले रखा हमने, पर मुझे वहाँ पे जाने का वो नहीं लग रहा ना अपना। अभी ये द्रोणगिरी होटल है ना कोई, उसके सामने का रखा किराए में, वो तो ढेले ताला तो लगा देना एक रूम में। अभी अब लोग आ रहे हैं, अभी हमारे रिश्तेदार आ रहे हैं, कोई आ रहे हैं, वो हमें कहाँ ढूंढेंगे। आपकी क्या उम्र होगी माता जी? मेरी है बेटा 70 साल। और आपने मुझे बोला कि आप 2 बूढ़ा बूढ़ी, आपके पति भी इसी घर में रहते हैं। हाँ। इतना आपने पूरी जमा पूंजी लगा के हाँ, घर बनाया तो क्या अब ये घर कभी भी ठीक हो पाएगा? अब तो मुझे मुश्किल लग रहा है बेटा, इसको ठीक बनाने में तो मुश्किल है। तो ये सारी हमारी जमीन जगह सब धस रही, कौन बनाएगी इसमें ना, कौन खर्च करेगा इतना। The situation was so bad that many residents here had to stay on the streets all night in the brutal cold, worried that their homes may sink around them. 11-year-old Soumya spent the last few nights with her family on the streets after her house developed massive fissures. She says government knew everything. Soumya, tell me something. You have been spending your nights out on the streets with your family. It is so cold. The nights are so chilly. I mean, what is the situation on the ground? The situation on the ground is so messy that there are in our house, one part of our house is having messy cracks, and we are so scared about going inside of our house because there are messy cracks and we don't know if it will break, what we'll do and where we'll go. Right. So, it is so cold and you have been out on the streets with your family. Has the government given your family any kind of help as of now? No, they have not given us any kind of help up till now, but now if they will give, so it's good. Today the Chief Minister came, they spoke to your family. What did the Chief Minister Pushkar Dhami said? He said that keep yourself safe and we will do something to help you. They said that keep you be with your families, don't go anywhere else, and every time you be with your family. But even if you be with your family, you cannot be inside your house, the house which your family must have built with spending all their savings. I'm so sorry to ask you this, but how do you feel at this point of time? I mean, of course, I'm sure you must be feeling very scared. Yes, I'm feeling very scared at this point because there are messy cracks and this Joshimath is breaking down into pieces and the government is not helping us. आपको लग रहा है गवर्नमेंट कितना भी दे दे वो घर को कॉम्पेंसेट कर पाएगी? नहीं, no, I don't think so. मेरे को नहीं लगता है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट जितना भी देगी, अगर गवर्नमेंट ने दे भी दिया तो इतना बड़ा घर चलो हम बना भी लेंगे, लेकिन what about the job we'll do, and what about the food we'll eat, and of our study, of course it will not help in our studies because the fees of the school and all, and if they'll give us some space or the money, but the school fees and the job. Why do you think this is happening? Do you think the government already knew that this kind of a situation might arise in Joshimath? Yes, they should be known about this because this is very sensitive area and they should not bring that big equipments and machines
to dig the soil and to make that this project and all. Even businesses have incurred massive loss. Hoteliers who were ready to welcome tourists around this time of the year have lost all hope now. 68-year-old Thakur Singh Rana, who used to run Malari Inn, a famous hotel at the entry of Joshimath, has no means to earn now, as his hotel has tilted towards another building and can collapse any time. राणा जी, आप इस मलारी इन होटल के ओनर हैं? जी मैम। मैं देख सकती हूँ कि ये दो आसपास में जो दो होटल्स हैं पूरे तरीके से एक दूसरे पे झुके हुए हैं, मतलब इतना खराब हालत है कि कभी भी गिर सकते हैं। जी, होटलों के तो दोनों हालत खराब हो गए मैम, लेकिन ये होटल नहीं झुका हुआ है, मलारी इन नहीं झुका हुआ है, माउंट व्यू झुका हुआ है। इसकी प्रूफ ये है कि ये लेबल लगाया गया है ऊपर, स्टेट लेबल, और ये नीचे आप देख रहे हैं होटल इधर खिसक गया, ये रोड जो जहाँ तक थी वो इधर ही रह गई, उधर ही रह गया मैम। तो कब हुआ ये हमारा तो ये तो लगातार झुक ही रहा था, लेकिन ये तो हमारा 2 तारीख रात 2 बजे करीब हो गया। 2 तारीख को, मतलब कुछ ही 4-5 दिन था, 4-5 दिन पहले। जी। तो मैं देख सकती हूँ जहाँ पे हम लोग जमीन पे खड़े भी हैं, यहाँ पे भी इतनी बड़ी बड़ी दरारें हैं, इतने बड़े क्रैक्स हैं। आपके होटल में आपने पूरा सामान भी बाहर निकाल दिया, आपका कितना नुकसान हो गया? मेरा कम से कम 7 करोड़ का नुकसान हो गया है। 7 करोड़? जी। और अब आप क्या करेंगे? इतना आपने अपना पूरा सेविंग्स खर्च करके ये होटल बनाया? मैम, जिंदगी भर की यही कमाई है। अब मेरा तो कहीं कोई जगह भी नहीं है, कहीं मेरा ठिकाना नहीं है, यही था और ये तो सारा बर्बाद हो गया। अब समस्या यही, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। तो आप लोग रहते भी यही थे नीचे? नहीं, हम सबसे बेसमेंट में रहते थे, वहाँ रहने लायक है ही नहीं मैम। वो रहने लायक नहीं रहा? बिल्कुल रहने लायक नहीं है। तो अब आप लोग कैसे गुजारा कर रहे हैं? ये नगर पालिका का गेस्ट हाउस दे दिया गया, लेकिन वहाँ भी पता नहीं कब तक रखेंगे, क्या बोलेंगे। ऐसी अवस्था में क्या हम लोग इतना एक भयावह स्थिति है ग्राउंड पे, क्या लगता है आपको कि जोशीमठ का फ्यूचर क्या है? मैम, जोशीमठ का फ्यूचर तो बिल्कुल खत्म है। अब तो ये तो किसी जमाने में ये सांस्कृतिक नगर था, ये धार्मिक नगर था। मंदिर में भी हम देख रहे थे क्रैक्स आ गए हैं। जी, उसमें वहाँ भी क्रैक्स आ गए हैं, सब जगह शंकराचार्य आश्रम में भी क्रैक्स आ गए हैं। एक छोटा सा मंदिर था नीचे मारवाड़ी की तरफ, वो टूट गया है। तो इतनी सेंसिटिव एरिया में ऐसी चीजें हो रही हैं, आपको लगता है सरकार को पहले पता था कि ऐसा हो सकता है? सरकार को बिल्कुल पता था। कई बार प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दिया गया, ये एसडीएम साहब महोदय के माध्यम से, फिर मुख्यमंत्री जी को बार आग्रह किया गया, ज्ञापन दिया गया, लेकिन उन्होंने सुध नहीं ली। Construction activity is not limited to Joshimath, and damage caused by the construction activity is evident across the region. These roads, critical for the army, are meant to be a lifeline to the line of actual control along the Indo-China border. These roads have also developed cracks. And here in Rishikesh, a tunnel being constructed by the railways also has massive cracks. Its structural integrity clearly in doubt. After ignoring several letters from the residents last year, the government of Uttarakhand declared Joshimath as a disaster-prone zone on Monday. ये आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा अधिसूचना एक जारी की गई है, जिसमें जोशीमठ नगर पालिका का जो क्षेत्र है उसको आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत घोषित किया गया। भारत सरकार से 2 टीम्स आज जोशीमठ में आ रही हैं। जल शक्ति मंत्रालय की एक हाई लेवल टीम है और गृह मंत्रालय से सचिव बॉर्डर मैनेजमेंट और उनकी टीम आज वो भी जोशीमठ में आ जा रहे हैं। जोशीमठ के क्षेत्र में अभी हमने नगर पालिका क्षेत्र में और नियर बाय एरियाज में अभी सभी निर्माण कार्य अग्रिम आदेशों तक हमने अभी रोक लगा रखी है। Joshimath is a zone 5 seismic zone, which means it's highly prone to earthquakes and it's a very sensitive area owing to its proximity with our border. Plus it also connects to very important religious places, the Hemkund Sahib and the Badrinath. Now the question is, after knowing all this, why did the government decide to bring in the NTPC plant and huge equipments and machineries in this fragile and sensitive region, which according to the residents of the area are the main reason for the damage on the ground? Was the government waiting for a tragedy to happen? And as we show you shocking and horrific visuals from ground zero of an entire town gradually sinking, we leave you with a question and a thought. Is development more important than people's lives? With camera person Rakesh Singh in Joshimath in Uttarakhand, I'm Tanushree Pandey reporting for NDTV.